Alright, so hi guys, a very good evening. All of you joining us live. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. Welcome to Gradeup. Hi Devanshi, hi Yashasvi, Arnav is here. Hi Arnav, hi Tanya. Welcome buddy, welcome. Good evening everyone joining us live. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. Kamaljeet, good evening, good evening. Hi Archie, good evening. Hope all of you are doing well. Hi Srishti, again good evening buddy, good evening. Hope you all are doing well. So guys, today's session is extremely important. If you are a Clat aspirant, if you are a law aspirant, definitely lots of you must have this thought in your mind here. 12th कैसे मैनेज करें? If basically we are preparing for Clat 2022, how do we manage our board exams? All right, बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आवर फैमिली सेज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड पढ़िए 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 बिल्कुल. तो कैसे मैनेज कर पाएंगे हम? हाउ विल वी एबल टू बी how will we successfully be able to manage our boards as well as Clat? So I will basically be sharing all the knowledge with regards to this topic right today in this session. तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. Welcoming each and every one of you. Welcome. Hi Arnav, everyone. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. Much needed session, isn't it? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब. All right. So guys, this session basically, as you all know, is for Clat 2022 students. But if you are a 2023 student, don't worry, you can basically learn all the tricks here, implement them again, right away. You can start implementing them right now, and it will definitely give you rewards in the future as well, right? तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से. Let's quickly begin. Welcome everyone. Welcome. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. Absolutely. So much needed section. Here we go. तो guys, सबसे पहले when we are talking about Gradeup, तो आपको पता है lots of success stories we've already come out here on our Gradeup YouTube channel. We are in the near future we're coming out with lots of other success stories as well, right? तो आपके लिए बहुत जबरदस्त सक्सेस स्टोरीज हम लेकर आ रहे हैं. ऑल इंडिया रैंक 18 आपने देखा होगा आज ही. बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं. तो डू कीप अ टैब ऑन दैट. और अगर आप यही सक्सेस का पार्ट बनना चाहते हैं, guys, I have a great news for all of you. We've launched a course for Clat 2022 students. You can come here, study from NLU graduates themselves, right? The medium of communication is both in English as well as bilingual. So there are two courses. You can opt for either of them, right? आप bilingual course के लिए opt कर सकते हो. You can opt for the English only course as well, right? And basically in this course you'll get lots of benefits. Here are some benefits for you. You can basically start your preparation from scratch. अगर आपने zero से start करनी है, you can basically start your preparation. Duration of this is 10 months. Highly interactive doubt clearing sessions, expert guidance by National University alumni, like I mentioned, and there will be lots of tests, lots of quizzes, lots of mock tests available at your disposal, right? So ये सारे opportunities आप सबके पास हैं. अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, if you are preparing for 2023, guys, think of starting this immediately. Think of starting it right now. Don't wait कि यार कल करेंगे, भविष्य में करेंगे, तब करेंगे. No, start immediately. जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा. Your enrollments for this batch are absolutely going on as we speak, right? अभी चालू हैं. अगर हम बात कर रहे हैं 2023 के enrollments, right? They're on as we speak. So जल्दी से, don't waste your time. Make sure you enroll ASAP. These are the faculties who will be teaching you. You can see here, Devajyoti sir is there, Nivedita ma'am is there, Surjit sir is there, I am there. All of us are from national universities. We will be there to help you. Apart from us, a highly experienced, most sought after faculties, KD sir, Alpa ma'am, Vinod sir, Rabia ma'am, Salik sir, Ankur sir, and Ashutosh sir is also there. So lots of experience basically have helped thousands of students crack the exam. So ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे teachers at Gradeup. So make sure, अगर अभी तक आपने free trial आपकी अवेल नहीं करी है, फटाफट से कर लीजिएगा. If you want to speak with our counselors, at the bottom of your screen the numbers are visible. Do call them, right? तो चलिए फटाफट से let's quickly begin. Alright, चलिए जो क्वेश्चन आ गया है जी, how to manage boards with Clat.
ये लीजिए। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू मैनेज बोर्ड्स विद क्लैट, आई विल बेसिकली बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो भाई कैसे मैनेज करना है बोर्ड्स के साथ क्लैट को। सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या करेंगे, we'll identify various tricks which will help us improve our time management, right? Time management को improve करने में मदद मिलेगी, how to basically manage both boards and clat. We will also understand this, that every individual is different. Some of them actually require सब कुछ आप में से कुछ होंगे जिनको लिख के याद होता है, किसी को सिर्फ ओरली वर्बली पढ़ के भी याद हो जाता है, किसी से सुन के भी याद हो जाता है. सो एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट सूट्स यू द बेस्ट, वी विल बेसिकली फाइंड दिस आउट. ऑल्सो व्हाट डू आई वांट इन रिटर्न इज यू गाइज टू हिट द फटाफट से अपना अंगूठा मुझे दे दीजिए, फटाफट से थंब अपना दे दीजिए, मतलब लाइक कर दीजिएगा फटाफट इस वीडियो को. चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों. पहला पॉइंट, सबसे पहला, द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट इफ यू आर बेसिकली टू मैनेज बोथ बोर्ड्स एज वेल एज योर क्लैट. सबसे पहला पॉइंट है हैव अ डेली प्लानर. राइट, यू शुड हैव अ डेली प्लानर कि रोज क्या करना है आपको, ऑन अ डेली बेसिस व्हाट डू यू हैव टू डू. आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि उठे और सुबह और फिर डिसाइड कर रहे हो अब क्या करें यार, आज मूड है छोले भटूरे खाने का, छोले भटूरे खा लिए, उसके बाद देन यू आर डिसाइडिंग यार क्या करना है. अब छोले भटूरे खाने के बाद किसका पढ़ने का मन करता है. ठीक है, तो यू हैव टू बी रियली स्मार्ट अबाउट थिंग्स. राइट, एवरी डे एवरीथिंग दैट यू डू बेसिकली इज अफेक्टिंग योर ओवरऑल स्टडी पैटर्न. राइट, आपके पूरे स्टडी पैटर्न को वो डिफाइन करता है. जब आप उठते हो, क्या खाते हो, क्या कर रहे हो, आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो, ऑल दीज थिंग्स बेसिकली रात को कितने बजे सो रहे हो, ऑल दीज थिंग्स आर प्ले अ ह्यूज रोल इन योर डेली प्लानिंग. राइट, तो चाहे सुबह पढ़ रहे हो, चाहे दोपहर में पढ़ रहे हो, चाहे शाम में, चाहे रात में, यू कैन स्टडी व्हेनेवर यू वांट. राइट, you can study whenever you want, but make sure you have a daily planner with you. Right, रोज every day you should have a plan attached. अगर plan नहीं है you will face problems. So make sure there's a plan, daily plan is there. Right, ये जरूरी है आपको. Say for example मेरा plan है कि कल मुझे पढ़ना है एक let's say मुझे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर करना है. This is my plan for tomorrow. Now चाहे कुछ भी हो जाए, I will make sure that I basically achieve my डेली, ये जो मेरा डेली का प्लान है ये मेरे को पूरा अपना अचीव करना है. ये मेरा जो टारगेट है ये मुझे अचीव करना है. गाइस, जब टारगेट की बात कर रहे हैं तो ये भी आपको ऑब्वियसली इट्स अ गिव अवे, अ वेरी इजी गिव अवे. राइट, डेली टारगेट्स यू हैव टू सेट फॉर योरसेल्व्स. राइट, तो एक डेली प्लानर बनाना है कि मैंने क्या क्या किया. कीप अ ट्रैक ऑन वॉट एवर यू डू. राइट, वॉट एवर थिंग्स यू डू, मेक श्योर यू कीपिंग अ टैब ऑन द सेम. उसी के साथ डेली टारगेट्स होने चाहिए आपके, शॉर्ट टारगेट्स. कीप योर टारगेट्स रियली शॉर्ट. राइट, और टारगेट्स ऐसे होनी चाहिए जो अचीवेबल हो. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने डेली टारगेट बना दिया अपना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और अचीव नहीं हुआ और फिर आपको लगे अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, दिस इज नॉट समथिंग विच इज हेल्पिंग मी. राइट, ये नहीं होना चाहिए. आपको शॉर्ट टारगेट्स रखिए जैसे जो डूएबल हो. से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि आप बहुत चीजें पढ़ सकते हैं, आप रीडिंग स्पीड अच्छी है आपकी, योर रीडिंग स्पीड इज वेरी गुड, everything you whatever you study basically you can retain for a long period of time. In that case I will recommend you to basically have a bigger target. Say for example reading target कर दिया आपने कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर के साथ आपने बोल दिया कि I will have basically study let's say 1 month of current affairs for the month of July. ये मैं रिवाइज करूंगी. साथ I will also do let's say reading comprehension, practice 5 questions of reading comprehension. So these kind of targets basically you can prepare for yourselves, and these targets should be achievable as per your daily routine. आपका daily habits जो है उस हिसाब से आपको प्लान करना है और उसी हिसाब से आपको एक्ट करना है. राइट, एवरी टाइम यू अचीव अ टारगेट, कोई भी टारगेट आपने रखा अपने लिए और वो जब भी अचीव करें आप, व्हेनेवर यू अचीव दैट टारगेट, मेक श्योर यू रिवॉर्ड योरसेल्फ. राइट, अपने आप को रिवॉर्ड कीजिएगा. आप रिवॉर्ड कैसे करोगे, हाउ विल यू रिवॉर्ड योरसेल्फ? रिवॉर्ड योरसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग. राइट, आप कुछ भी अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं, जैसे जो भी आपको खुश करने में मदद मिले. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आज आइसक्रीम खाने का मन है तो आप आइसक्रीम तभी खाएंगे आप जब आपका डेली टारगेट्स पूरा होगा. दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस. सो डेली टारगेट्स होने चाहिए. ये तो हो गए क्लैट की प्रिपरेशन के टारगेट्स. उसी तरह से आपके टारगेट्स होने चाहिए डेली के फॉर योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन एज वेल. राइट, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के भी टारगेट्स होने चाहिए. से फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि भाई आपके लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपके कॉमर्स है तो आपने बेसिकली इफ यू हैव कॉमर्स इन योर
and 12th, you basically have economics to study, you have, let's say, examples, right? So you have economics to study, you have let's say accounts to study. तो अब ये subjects भी हैं. On a daily basis you also have tuitions for the same, right? आपके tuitions भी हैं उनके. तो when you are basically managing your daily tuitions, right, आपको वो whenever you preparing a target, keep these things in mind that yes, there will be fatigue. दोस्तों थकते हो या नहीं थकते? Are you tired? Aren't you tired when you basically give any बेसिकली टेस्ट और अटेंड एनी क्लास एनी सेशन? अब जब ट्यूशन करके आते हैं, ऑनलाइन भी हो चाहे, थकावट होती कि नहीं होती? थोड़ी थकते हैं कि नहीं होते? थकते. वी आर टायर्ड, राइट? वी फील टायर्ड, वी फील अरे यार अब क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट, राइट? तो ये इट्स बट ऑब्वियस, राइट? तो यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई शॉर्ट टारगेट्स बनाना हमारे लिए जरूरी है. कीपिंग इन माइंड कि यार हमारी बॉडी जो है वो थक भी जाएगी, तो इसीलिए छोटे टारगेट्स बनाइए, डूएबल टारगेट्स बनाइए, एंड एवरी टाइम यू अचीव योर टारगेट रिवॉर्ड योरसेल्फ, राइट? हर रोज आपको टारगेट्स बनाने हैं एंड एवरी डे यू हैव टू रिवॉर्ड योरसेल्फ. गिव योरसेल्फ पॉइंट्स, राइट? पॉइंट्स दीजिए, अब बाद में जाके रिडीम कीजिए पॉइंट्स. प्ले अराउंड विद दिस, राइट? यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स. तो ये आप कीजिए, दिस विल डेफिनेटली help you a lot. Hi guys, hi everyone joining us live. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. Yes Revant, this will help for 2023 as well, right? Similar strategy for 2023 as well. How many hours is enough to crack Clat? Well done on this, right? I'm sure you know it's a great question and question which lots of you are wondering कि कितना minimum कितना पढ़ना चाहिए. Guys, every day there should be कंसिस्टेंसी, राइट? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने इतने घंटे पढ़ लिया तो बस हो गया, आपका पक्का ही है, राइट? 8 घंटे पढ़ लिया तो पक्का है. कंसिस्टेंसी, दूसरे दिन अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो जीरो है वो. यू हैव टू मेक श्योर, चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, चाहे 4, चाहे 6, चाहे 8, राइट? हाउ मेनी आवर्स यू आर पुटिंग इन इज बेसिकली नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है? द बेसिकली कंटिन्यूटी, राइट? द बेसिकली लगातार इज, आर यू doing this on a consistent basis? Consistency is the key, right? अगर आप day in and day out you are doing this on a daily basis, you're pretty much sorted you are, right? तो ये आपको करना है, ठीक है जी? क्लियर है? Also guys, do note this, for your law entrance exam your board marks play no importance. आपको 45% अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, if you're from general category, if you score more than 45% marks, you are sorted, you are eligible for Clat, ALET and all other exams. 45% plus. I am sure that even if you write the exam today, you will score more than 45%. So don't worry too much about your board marks, right? अगर आप थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे Clat का इतिहास उठा के देखेंगे, all the toppers etc, you know, वो सारे के सारे जो भी नेशनल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वहां पे वैसे भी होंगे जो 70s 80s 90s में परसेंटेज ला रहे हैं, राइट? 70s वाले भी हैं, 60s वाले भी हैं. आई बेसिकली आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला, NLU पटियाला से मैंने मेरी लॉ करी है. आई हैड, यू नो, माय परसेंटेज वाज इन 60s इन माय 12th, राइट? सो इट डज नॉट मैटर कि आपने स्कूल में कितने परसेंट लाए हैं, इट मैटर्स कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या थी. दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इवन इफ यू स्कोर 100% मार्क्स, राइट, आपको एनलेस बैंगलोर में गारंटीड सीट नहीं मिल रही है. सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, कि 12th पे बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिएगा. योर नंबर 1 प्रायोरिटी हैज टू बी क्लैट, ठीक है? लॉ एंट्रेंस एग्जाम हैव टू बी योर नंबर 1 priority. Guys, on a daily basis there are some non-negotiables as well. कुछ non-negotiable deals भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. जो पहली है non-negotiable deal, वो है newspapers. Guys, on a daily basis make sure every day you are reading newspapers, right? Newspapers, preferably the Hindu, right? Preferably the Hindu. Read Hindu. You will basically be preparing your vocabulary, you will be preparing your, you know, English language, plus, you know, critical reasoning, your you know, legal, as well as your general awareness. All these basically will be helping by just, you know, reading this newspaper. अगर आप newspapers पढ़ रहे हैं, read the front page, read the international page, read the editorials, and that's about it, right? आप चाहें अपने फन के लिए कोई और स्पोर्ट्स भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, right? तो these are certain things that you should be doing. If you're doing all these things, couple them with your you know, your YouTube sessions, plus whatever we are doing in the classes. ये सब चीजें अगर आपने कर ली, you are pretty much sorted, right? So guys, this is non-negotiable. Newspapers are absolutely must. If you are facing difficulties in procuring the Hindu, I would recommend Indian Express भी आप पढ़ सकते हैं, Times of India भी पढ़ सकते हैं, Economic Times.
subscribe to a newspaper, mandatory this is, right? This is a mandatory task, everyone should be doing this. कुछ भी नहीं कर रहा दिन में, बस न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया आपने, 1 घंटा पूरा लगाया आपने और न्यूज़पेपर पढ़ लिया. शुरू में it will take you time, right? Initially it might take you 1.5 hours, right, to complete the entire newspaper, but gradually this time will obviously decrease. 1 घंटा हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएगा, right? The time will keep on decreasing, right? चलिए, sir, I want 99% in 12th and any NLU, but I will recommend you यहाँ पे थोड़ा सा अपने टारगेट्स को आप चैनलाइज कीजिए. Your number 1 target based on this comment, based on this Naga Devi, you're basically K Naga Devi, basis on this comment of yours, I can basically understand this, that your number 1 priority is your 12th standard, right? Your 12th board mark is your number 1 priority. Why is that the case, right? It is because we've all been taught, right, कि अगर बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए तो अपना फ्यूचर सिक्योर है. यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपको, क्लैट में अगर आपके रैंक अच्छी आई तो आपका फ्यूचर सिक्योर है. यू हैव टू बेसिकली मेक श्योर योर नंबर 1 टारगेट इज योर बोर्ड्स, right? Boards nahi, sorry. Your number 1 target is your law entrance exam, right? Law entrance exam, number 1 target has to be law entrance exam. Number 2 can be board. I'm not saying to ignore your board exams altogether, but your number 1 priority should be Clat exam, right? If you want to do it with your boards, right? If you want to clear it with your boards, this is something which you should be doing, right? तो ये बिल्कुल करना है आप लोगों को. And ये अगर आपने कर लिया, number 1 priority बना लिया, if you basically make it as your number 1 priority, you will definitely ace this exam with flying colors. This is something which I can say without a doubt. Now this is a practice which you can do, guys. Every one of you finish your 12th board syllabus ASAP. Keep a target in your mind कि मुझे अक्टूबर तक खत्म करना है और मुझे सितंबर और नवंबर मैक्स, right? You have to complete your board syllabus as soon as possible so that you can devote majority of your time to your Clat preparation, right? Clat preparation के लिए majority time आप कर सकें. You know that you're competing with students who are taking a repeat as well. Repeat भी ले रहे हैं बच्चे यहाँ पे. बहुत बच्चे ऐसे भी हैं. You're competing with students who are basically preparing for 2 years in the 11th and 12th. You are competing with all of them. So make sure that अब आपने जब decide कर ही लिया है कि मुझे भाई करना है यहाँ पे, I have to crack the exam, तो यहाँ पे आपको मैं यही कहूँगा, आपको बोर्ड एग्जाम पे पहले फोकस कीजिए, फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करके पॉकेट में डाल दीजिए, सो दैट नाउ यू प्रीटी मच सॉर्टेड, यू हैव ऑलरेडी गॉट योर गुड मार्क्स, नाउ यू इट्स जस्ट अबाउट रिवीजन, राइट? सो व्हेनेवर यू फाइंड टाइम इन योर while doing your CLAT preparation, you can always revisit your board preparation, but my advice would be focus solely on your CLAT once your syllabus for 12th is complete. 12th का syllabus complete हो गया, फिर पूरा shift डाल दीजिए आप अपना CLAT की तरफ, right? So aim for syllabus completion ASAP, right? 12th बोर्ड का syllabus खत्म कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है? चलिए 12th के मार्क्स, alright, I will say this to you, पेरेंट्स को तो चाहिए ना, एब्सोल्युटली अग्री, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने. तो गाइज डेफिनेटली डू शेयर दिस विद योर पेरेंट्स एज वेल, दैट इफ वी टॉक अबाउट लॉ as a career, right? If you've decided law as a career, law में number 1 priority is actually NLU में जाने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं मैटर करते. What matters is your CLAT. They just want you to have a good secure future. They want you to study. अगर आप 12th पेरेंट्स मना इसलिए करते हैं क्योंकि आप जो है आप बोलोगे कि बोर्ड्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ना तो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे होंगे ना आप क्लैट के लिए पढ़ रहे होंगे, तो दे विल डेफिनेटली हैव अ प्रॉब्लम. बट इफ यू आर स्टडिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर क्लैट, दे विल हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. दे विल रियलाइज दैट यस, यू आर प्रीटी मच सॉर्टेड इन योर लाइफ, यू हैव ऑलरेडी मेड सर्टेन डिसीजंस, यू आर बेसिकली बाउंड टू क्रैक दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स. दे विल रियलाइज इट इन नो टाइम एंड दे विल गिव यू इमेंस सपोर्ट, राइट? तो जरूर उनके साथ ये भी शेयर कीजिएगा, ठीक है? आपको काफी हेल्प मिलेगी. How much time is essential for CLAT preparation? बेटा ये मैंने आंसर किया है. The maximum amount of time that you can devote, right? After your board syllabus completion, my advice is to go berserk, right? Go crazy on this. The more time you can devote on this, the better it is. There are students who are studying on a daily basis for 5 hours, 6 hours, 8 hours and 9 hours, right? So you have to basically find your sweet time, the majority of your time that you can basically devote to your preparation. It should be anywhere between 4 to 9 hours, right? 4 to 9 hours is something which should be an ideal timeline to make sure that you are there in endless Bangalore. If you want to reach there, you have to put in those extra effort, right? अब guys कुछ generic tips I'd like to share before I wind up this session. Very important these tips are. Number 1 tip
for all of you is to be consistent. Guys, absolutely super duper important. Consistency is the key. If you study for one day, don't study for the other day, then study for 3 days, then don't study for 4 days. This is something which does not works for CLAT preparation. CLAT preparation mein consistency is absolutely the key, right? Especially newspaper reading. Guys, no matter what, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, any guest comes to your place, you will read newspaper, कुछ भी हो जाए, any way possible, right? You have to basically be regular in terms of reading newspapers, keeping a tab on the news, whatever is happening around the world, and moreover keeping the YouTube, right, watching the YouTube sessions on a daily basis as well, right? YouTube sessions भी देखिए, जो भी आपके लिए helpful sessions आपको लग रहे हैं वो सभी लगातार आप देखते रहिए, right? Keep watching them as well. Be consistent. Nothing is a substitute for consistency, right? कुछ भी नहीं हो सकता, consistency का कोई भी substitution नहीं है. Guys, second is self-belief. Believe in yourself, right? Believe in your abilities. Every year it is students like you who are basically fearing कि यार boards में क्या होगा, क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे. It is just the kind of students basically who end up cracking CLAT, right? Every year this question is asked. Every year the same question students ask कि sir how will we manage boards and boards and 12th. Guys, don't worry about it, don't stress too much about it. It is just about your self belief. If you believe that you can do it, you can definitely do it, right? There are students who take a drop year, there are students who prepare from 11th, but if you basically ask me is there possibility while you are in your 12th, then the answer to this is yes. I did the same when I was preparing. There are lots of my students even this year, right? We will be coming out with lots of interviews as well. तो आप देखेंगे वहाँ पे lots of students basically have shared the same thing, that yes, they were able to do it with their 12th, and basically how did they manage is a wonderful story, which is basically inclusive of all these points that we are actually talking about here, right? Number one point is absolutely consistency. Second is self belief. Have confidence in your abilities, right? अपने खुद की abilities पे confidence होना बहुत जरूरी है. If you are confident, you are sorted, right? Guys, monthly evaluate your progress, right? It is absolutely super duper important now. It is not an exam जहां पे आपके parents या teachers आके आपको बोलेंगे अरे भाई पढ़ रहे हैं क्या, PTM हो रही है, ये सब चीजें, ये this is not an exam of that, right? This gone are those days. The school days are over. Now you are basically preparing for your dream college. अगर आपको अपने dream NLU, dream college में जाना है, if you want to go there, you have to evaluate your weekly performance, your monthly performance. लगातार आपको एक tab रखना है इसके ऊपर, right? So make sure you are evaluating yourself every month. Every month rate yourself, right? कि क्या कर सकता था, what all things could have done. Every month starting, say for example today is August beginning, right? 3rd of August. You can write your plan for the month of August. These are the things that I want to achieve by the end of August. ये मैं करना चाहता हूँ या ये मैं करना चाहती हूँ. You've written all these things down. Now what you have to do is make sure that you actually after August ends, on September you are revisiting this page and you're checking कि यार क्या, what were my targets, have I achieved all the targets, right? If you have achieved your targets, again reward yourself, right? Reward yourself. This is what you have to do. Guys, ups and downs are regularly here. ये बहुत जरूरी है जी आप लोगों का समझना, राइट? अप्स एंड डाउन्स बराबर होगा. कई बार आपके मॉक टेस्ट जब आप दोगे, कई बार आप पढ़ाई करोगे, बोरिंग लगेगा, यू विल फाइंड डिफिकल्टी इन मैनेजिंग योर बोर्ड एग्जाम्स विद योर क्लैट प्रिपरेशन. वो आपका एक्चुअली इट इज जस्ट योर टेस्ट. आपने देखा होगा व्हेन यू बेसिकली लाइट बेसिकली अगर आप कोई भी अगर आप दिया वगैरह कुछ भी जलाते हैं, राइट? इफ यू लाइट अ लैम्प, यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन इट बेसिकली इज जस्ट अबाउट टू एंड, इट बेसिकली starts exploding. एकदम तेज जाता है, उसकी लॉ जो है बहुत तेज हो जाती है. सो व्हाई डज दिस हैपन? वही है कि मतलब भाई लास्ट एफर्ट जो है वो एकदम पूरा एकदम जबरदस्त लगा देता है जाने से पहले. तो दैट्स अबाउट इट, राइट? इट्स ऑल अबाउट द फाइनल टेस्ट, राइट? दिस इज अ टेस्ट. ट्रीट इट एज अ टेस्ट, राइट? जब भी आपके साथ ये हो, जब आपको लगे अरे यार नहीं, आई कैन नॉट मैनेज, आई विल डू इट आफ्टर द बोर्ड्स, ये फीलिंग आएगी आपको, राइट? हर साल हमेशा सभी को आती है. तो जब ये फीलिंग आए, जस्ट चक इट, राइट? उसको हटा दो, फेंक दो उसको, फीलिंग को साइड में. बोलो यार कोई बात नहीं, थोड़ी सी टाइम की बात है यार, आई जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट, कोई बात नहीं. थोड़ा सा आप उस टाइम पे यू कैन जस्ट बेसिकली recollect your thoughts, your basically efforts should be again channelized properly. और आपने फिर क्या करना है, जब आपका वो डाउन फेज आया,
जस्ट मेक श्योर कि आपको बाउंस बैक करने के लिए आपके पास कुछ चीजें आपके लिए तैयार हो। उसमें से नंबर वन चीज जो मैं आपके लिए रेकमेंड करूंगा, नंबर वन मोटिवेटिंग गिफ्ट फ्रॉम माय साइड विच विल कीप यू मोटिवेटेड फॉर द इन द लॉन्ग रन इज बेसिकली योर ड्रीम कॉलेज। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर ड्रीम कॉलेज, स्टिक इट इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल। जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके सामने इर्द गिर्द कहीं पे भी, wherever you can basically make sure you stick it somewhere so that you can watch it consistently, regularly. You can motivate yourself whenever you're feeling low and down, right? So this is something which you should be doing. But this journey will definitely have ups and downs. जीतता वही है, एनएलयू वही जाता है जो लगातार उसके बावजूद लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। इस बार वी हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज, जिसमें से एक का मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहाँ पे उनके बेसिकली सफर्ड फ्रॉम ही हैड लॉट्स ऑफ मेडिकल इश्यूज, राइट? बहुत सारे मेडिकल इश्यूज थे, ठीक है, उनको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा बीच में। उसके बाद हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो वापस रिकवर करे, काफी लंबा ब्रेक हो गया उनके उस टाइम पीरियड में। उसके बाद वापस से कुछ दूसरा इशू चालू हो गया, उसकी वजह से फिर से नहीं पढ़ पाए थे। उसके बावजूद वो लगे रहे और आज वो जाके उन फर्स्ट लिस्ट में ही इज बेसिकली going to all set, going to Nalsar, Hyderabad, right? So basically there are lots of challenges which will be there in front of you in the entire 1 year now. एक साल में बहुत challenges आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ups and downs होंगे, but you just have to keep believing in yourself, right? And apart from that, the last point is also super duper important, and that is ये देखो, बिल्कुल सही कहा आपने भाई, low score in mocks, absolutely, बिल्कुल सही। If you are basically scoring low in your mocks, all of these are absolutely challenges. We will come out with lots of videos where we'll guide you how to increase your mock scores. For starters, start analyzing your performance, right? Mocks देने के बाद analyze कीजिए अपनी performance. That is the most important thing. कहाँ गलत गए, क्यों गलत गए, और जो भी आपके weak areas, gray areas identify कीजिए और उन पे work करना start कर दीजिए. This is something which will definitely work for you, right? चलिए, और लास्ट में गाइस, बिलीव इन योर मेंटर्स, एब्सोल्युटली सुपर डुपर इंपॉर्टेंट दिस एडवाइस इज, मेक श्योर आप लोग अपने मेंटर्स पे विश्वास रखिए। आपके जो भी जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेक श्योर यू ट्रस्ट योर मेंटर्स। आपके जो भी गुरुदेव हैं उन पे विश्वास रखिए, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। अगर हम बात करें ग्रेडअप की, इफ यू टॉक अबाउट ग्रेडअप्स mentors, here you can see all the list of mentors, all the national university alumni are here. Apart from that, highly experienced faculties with a cumulative experience of more than 100 years will be there to actually help you, right guys? तो इसी के साथ I will wrap up this class. Thank you so much. अगर आपने अभी तक क्लैट के लिए 2022 के लिए तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है, guys, we have a great announcement for all of you. There are 2 courses to be launched here on our Gradeup YouTube channel. Gradeup पे हम आपको बता रहे हैं, Gradeup app. So basically the first course is in exclusive English language, the other one is bilingual, Hindi और English। जैसे आज का सेशन था, just like that we will basically be having the entire course in bilingual medium, so you can opt for either of the two, right? कोई भी आप इनमें से opt कर सकते हैं और आप join कर सकते हैं। The benefits of these course are mentioned on your screen. I will take a few questions. Thanks Nitin. चलिए, so can we give 3 days to board and 4 days to clat in a week? Very good question, Yash. My advice beta will be no, right? Don't do this. 3 days to boards and 4 days to clat, 7 days to clat, and then you can basically devote some days to your boards, right? मेरी ये advice है आपका कि जो 4 दिन आपने बोला है, I am sure you are basically expecting कि 4 days में you will study lots and lots, right? You will be putting, let's say for example 4 to 5 hours or 6 hours or 7 hours, whatever you have decided. तो जो वो 4 दिन आप वो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, बाकी के 3 दिन जो है, अगर आप बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो उन 3 दिन में क्लैट को थोड़ा कम कर दीजिए, right? Amount of hours that you're devoting to clat preparation, you can basically reduce it. I hope this helps, Harsh. यश का क्वेश्चन था ना, यश, एलिट का रिजल्ट यार आने वाला है दोस्त। Archie, please ask this question again, beta. I can't find your question. Sir, is it important to make daily notes of current affairs if I am reading monthly magazine? Beta, monthly magazine can also be is also recommended, right? Monthly magazine तो करना ही चाहिए आपको. Apart from it, daily newspaper reading is absolutely a must, right? Make sure you are making notes on a daily basis as well, and this basically practice of yours will become a habit real soon. मेरी advice यही रहेगी बेटा, please
जरूर नोट्स बनाइए, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए। चलिए, डन है। All right. So all the very best to everyone for your results. Those of you who are waiting for your results, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं. I'm sure you guys will do a great job. And for those of you who are seeking for basically Clat 2022 कि भाई 2022 में मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल जाए, आप लोगों के लिए we have this exclusive course where we basically helping you start from scratch. So make sure you basically start from the first class itself, right? तो जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकेंगे उतना बड़ा एडवांटेज आप लोगों को। कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना चाहते हो, feel free to reach out to us on the number mentioned on your screen below, right? So with this, I will wrap up this class. Thank you so much for your time. All the very best to everyone. We will meet again real soon in the upcoming sessions. Till then, take care. Goodbye.